Bismillahirrahmanirrahim. Model Language School, I-10 2 Campus, Islamabad. Today the date is 21st September 2020. Class 1. Today class we will do an activity book and a textbook, and we will also do a notebook work. So firstly pick out your notebooks, and class today we will do a comprehensive paragraph. Okay, so pick out your notebooks and write a date. Now class, you can see it, I have prepared a page. So it's for class 1. The date is 21st September 2020. Comprehension paragraph number 3. ठीक है, we have already done 2 paragraphs. Okay, in previous videos you can see them. Read the following and then answer the questions. Now read this paragraph and then answer these questions. Okay, now number 1 is its paragraph, and what is this? Sui and Belly are best friends. Now they are talking about 2 friends, Sui and Belly. They are best friends. They made a scarecrow. They used old clothes. They want to keep crows away. The crows are eating all of the corns. Now you can see it that this paragraph is about scarecrow. Do you know what is this scarecrow is? Okay, I will tell you. सबसे पहले इस पैराग्राफ में बताया गया है सुई एंड बेली आर बेस्ट फ्रेंड्स. 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है, एक का नाम सुई है, एक का नाम बेली है. दे मेड अ स्केयर-क्रो. उन्होंने क्या बनाया? एक स्केयर-क्रो बनाया. स्केयर-क्रो ये होता है कि जो गाँव में नहीं होता, फसलों के ऊपर जो एक डमी टाइप बनाई हुई होती है, एक पपेट टाइप बनाया होता है. ठीक है, होता वो कपड़े का है, उसमें क्लोथ्स मतलब पुराने क्लोथ्स वगैरह डले हुए होते हैं, तो वो एक पपेट टाइप बन जाता है, इंसान टाइप बन जाता है. और वो ना फील्ड्स में लगा देते हैं. जैसे ना एक इंसान का मतलब इंसान जो है ना वो उस टाइप का एक बॉडी टाइप बना देते हैं, पपेट टाइप, और वो फील्ड्स वगैरह में रख देते हैं. तो ये जो क्रोज़ वगैरह होते हैं, कौवे वगैरह होते हैं, वो इस तरह कॉर्न की फील्ड में आके कॉर्न्स वगैरह नहीं खा सकते, या कोई भी वेजिटेबल हो या कोई सीरियल्स हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की फील्ड हो, तो उस पर अगर आपने स्केयर क्रो लगाए होते हैं तो वो क्रोज जो होते हैं, कौवे, वो समझते हैं जैसे ये कोई इंसान खड़ा हुआ है, और इस वजह से वो डर के उस जगह पे नहीं आते. तो ये जो सुई और बेली है, इन्होंने सोचा है कि हम जो है ना एक स्केयर क्रो बनाएंगे, और उसके बाद उन्होंने वो ये बनाते हैं. और वो किस तरह बनाते हैं? ओल्ड क्लोथ्स को यूज़ करके, पुराने कपड़ों को यूज़ करके उसको स्केयर क्रो बनाते हैं. दे वॉन्ट टू कीप क्रोज अवे. वो चाहते हैं कि जो कौवे वगैरह हैं वो दूर रहें. द क्रोज आर ईटिंग ऑल ऑफ द कॉर्न्स. और ये वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो क्रोज होते हैं वो कॉर्न्स खा रहे होते हैं. वो ये जो कॉर्न्स होते हैं ना वो खा रहे होते हैं, शौक से खाते हैं ना, तो वो मतलब उसको सिर्फ उस फील्ड्स को बचाने के लिए वो क्या करते हैं? वो स्केयर क्रो बनाते हैं. ठीक है, पैराग्राफ समझ आ गया. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट डिड सुई एंड बेली मेक? नाउ राइट, सुई एंड बेली मेड अ स्केयर क्रो. राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुई and Belly made a scarecrow. Okay, now number 2nd question is what kind of clothes did they use for scarecrow? Now right, they used old clothes for scarecrow. ओके, सो स्केयर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओल्ड क्लोथ्स यूज़ करे हैं वो. ठीक है, पुराने कपड़े यूज़ करें. वाई डू दे वॉन्ट टू स्केयर द क्रो अवे? नाउ राइट, बिकॉज BECAUSE, because the crows are
The crows are eating all the corns. All the corns. It's very difficult for me to write it in this way. So because the corns are eating because the crows are eating all the corns. Okay, full stop. Now fourth question is, do you think scarecrow worked? Why? So write yes, comma, it works to keep the crows away. It works to keep the crows away. Full stop. Okay, now last is write the title of the story. Now you will write the title. You can write any title according to this paragraph. I will write the crows, inverted commas, the CROW, crows, and scarecrow. Okay, okay class, it's really difficult for me to write this like this. So can you understand this? काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए लिखना इस तरह, जिस तरह ऑनलाइन काम कराना, इस तरह लिखना, एक हाथ से लिखना, एक हाथ से वीडियो बनाना. सो काइंडली कोऑपरेट with me. Okay, so firstly we have done this. Now pick out your class textbooks. Okay, टेक्स्ट बुक्स निकालें आप लोग. अब हम वो करते हैं, ठीक है, ये वाला काम करके. अब निकालें आप अपनी टेक्स्ट बुक्स. नाउ क्लास यू कैन सी इट्स पेज नंबर 56. टेक्स्ट बुक, पीपल एट वर्क. नाउ राइट अ डेट, that is 21st September, 2020. Okay, getting started. A busy market. A busy market. Look at the picture of the people in a busy marketplace. Underline this word, marketplace. Now you can see this picture and you can see different people and doing their own work, and they are busy in their working. So we will explain it, that what type of occupation they adopted and how much they are helpful for us. So look at him. He's a fisherman. He's he's selling a fish. You can see him, he is cutting a meat piece of meat. So he's a butcher. She is a sales girl or shopkeeper, we can also say, or we can also see that he is also a shopkeeper and he is selling fruits. No, he is selling vegetables and she is selling fruits. Okay, now he is loading a luggage. So they all are busy in their own work. So talk about these questions with your peers. Who are the people in the picture? Now you can see that who are the pictures in who are the people in the picture. They all are working people. They all are doing their work. They all are busy in doing their work. So what are they doing? He is selling a fish.
He is cutting the meat. She is also selling her fruits, and he is loading a load or boxes. Now number third is, can you name their occupations? Yes. He is a fisherman, he is a butcher, she is a sales girl, he is a shopkeeper, and he is a luggage person भी कह सकते हैं इसको, और loader भी कह सकते हैं. ठीक है, loader. Is their work important for us and why? Yes, their work is very important. We need them in our daily life. अगर फिशरमैन नहीं होगा देन हम मछली कहाँ से लेंगे? हर बंदा नहीं होता जो फ़िश को कैच कर लाए पानी के, मतलब कोई भी, हर इंसान ऐसा नहीं होता जो दरिया से ही मछली को लाए. नो. ठीक है, तो इसलिए हमें फ़िशरमैन की ज़रूरत है. हमें बुचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हर बंदा गोश्त नहीं काट सकता सिवाय बुचरमैन. सो बुचरमैन की हमें ज़रूरत है. अगर फ्रूट्स वाला ही नहीं होगा हम फ्रूट्स कहाँ से लेंगे? अगर वेजिटेबल्स वाला नहीं होगा हम वेजिटेबल्स कहाँ से लेंगे? अगर ये लोडर नहीं होगा तो हम अपना भारी जो सामान होता है वो किससे उठवाएंगे? सो दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट in our lives. Okay, now page number 57. Now it's page number 57. You can see it. Pre-listening. Help. Look at the picture and guess what is happening. Now underline this word happening. Now look at the picture and then guess what is happening. अब आपने पिक्चर देखनी है, उसके बाद अंदाज़ा लगाने के इस पिक्चर में क्या हो रहा है. Now you can see him. He is wearing a sunglasses and he is snatching her purse. He is a policeman who is running behind him. And she is shouting. So talk about these questions with your peers. What is the man in sunglasses doing? This. He is snatching her purse. वो उसका पर्स छीन रहा है. What is the policeman doing? Policeman is running after the thief. He's a thief. He's a bad boy. He's snatching her purse, and he is a good boy or good person. He's running behind him or running after him to catch him. ये पुलिस वाला है, ये इसके पीछे भाग रहा है ताकि वो इसको पकड़ सके कि वो उसका पर्स जो है वो स्टील ना करे, उसका पर्स स्नैच ना करे, उसका पर्स ना ले. इज़ एनी वन एल्स हेल्पिंग? और कोई हेल्प कर रहा है? नो वन इज़ हेल्पिंग हर सिवाय इसके पुलिसमैन के. इज़ द पुलिसमैन्स जॉब इज़ अ पुलिसमैन्स जॉब इम्पॉर्टेंट एंड वाई? येस, हिज जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पुलिसमैन नहीं होगा तो हमारी हेल्प कौन करेगा? हर बंदा, ऑर्डिनरी बंदा हेल्प नहीं कर सकता इस तरह ऐसे मोमेंट्स पे. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल थीफ के पास कोई गन है या कोई ऐसा टूल है जो हर इंसान फेस नहीं कर सकता, देन पुलिस वाले के पास तो पिस्टल भी होगी, तो वो मार भी सकता है उसको और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसलिए पुलिसमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर डेली लाइफ. ओके, नाउ क्लास इट्स पेज नंबर 58. फोनिक्स. द TH sound, th sound. Read the following poems aloud. Pay special attention to the words with the th sound. Now you can see it. It's a poem and it is also a poem. So read these poems and then underline the words with th. Okay, so you can understand it clearly. The puppies. Once there were 3 round puppies. Puppies, underline this word. Their bodies were so thick. Their mother fed them carrots so they would look like sticks. The baby brother. My baby brother has 3 teeth, and when he smiles they look sweet. He sticks his thumb through teeth and tongue. Underline this word tongue. Sticks, underline this word sticks, and their thumb stays until dinner comes. Okay, now you can read this poem and then we understand that there are some words with th sound. 3, thick, 3, thumb, through,
thumb. Okay, there are th sound, and the sound there, they, them, they, there again. Okay, so now pick out your activity books. We will do an activity, so pick out your activity books. Now class, it's page number 51 of activity book. Write a date, that is 21st September 2020. Phonics. Exercise 4B. The th sound. Look at the pictures and circle the ones with names that have the th sound. Now you will circle the th sound words. Okay, number 1 is train. No. Teeth. Yes, teeth. So circle this. Tree. No, it's a path, and it's tree, so it is not, and we will circle this because of path. It's a path. They are trees, but we will discuss this. हम ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. We are discussing it. ये path. तो so path, it's a th sound, so circle this. Now next page. Now class, it's page number 52. You can see it. Number 2 part. Unscramble the letters in the brackets and fill in the blanks with the correct words. Now you can see these are unscrambled words, and you will arrange them and then write it in this blank. We should dash our parents for taking care of us. We should thank. 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 We should thank our parents for taking care of us. Now number 2 is I live on the dash floor. My classmate lives 1 floor below me. So I live on the 3rd floor. THIRD. Third. John wants to eat less so that he can be as dash as his brother. As thin. 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 You can see them. These are th sound. Thank, third, thin. Okay. There are many sharp dash on the stems of the roses. There are many sharp thorns. THRONS. Thorns. Thorns means kante. It is a hot day and I feel very dash. I need a glass of lemonade. It is a hot day and I feel very thirsty. 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 Now the next is I dash. I saw my brother at the shopping center yesterday, but he said that he was in school at the time. So I thought. 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 She is afraid of loud dash. She is afraid of loud thunder. 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 थंडर का मतलब होता है बिजली चमकना. जब ज़ोर से बिजली चमकती है तो वो बहुत ज़्यादा, सॉरी, थंडर मीन्स बादल गरजना, ठीक है. सो थंडर की जब बहुत ज़ोर से बादल गरजते तो उसे डर लगता है. लाइटनिंग जो होती है वो बिजली चमकना होती है, और थंडर जो होता है वो बादल गरजना होता है. सो राहील हर्ड अ डैश व्हेन जूली फेल्ड. राहील हर्ड अ थर्ड. THUD. Third. Okay, when Julie fell. Okay, now next page is page number 53. Now you can trace them. You will trace them. 33 blue birds singing in the breeze. Lightning and loud thunder made the birds freeze. Now trace
this poem with your pencil and then again rewrite it here and then again here. So fill these lines with this poem. Okay, so start it. 30 THIRTY 30 THREE 3 blue birds singing SINGING in the breeze, comma lightning LIGHTNING and LOUD loud, thunder THUNDER made the birds freeze. Okay, now again rewrite it here and here, fill these lines. Okay, thank you.